Assalamualaikum guys, this is Afsar and welcome to a beautiful channel Afsar Engineers. अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और जो अभी तक चल रहा है इसमें जस्ट कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। Constitution of 1973. Constitution of 1973 was authenticated and published in the Official Gazette on 7th April 1973. गज़ेट क्या है? गवर्नमेंट की अखबार में जाहिर करना। इसके गज़ेट की यहाँ पे ये नहीं निकलती है। The Constitution of 1973 was enforced on 14th August 1973. Next point. The Constitution of 1973 consists of 280 articles. तो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 250 आर्टिकल्स पे बेस्ड है और 1956 का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 234 आर्टिकल्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 12 चैप्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल्स। Next point, the Constitution of 1973 provides a parliamentary form of government. Constitution of 1973 क्या करता है? Parliamentary form of government provide करता है। Next point, Article 41 provides that the president is the head of state. The tenure of president will be 5 years. आर्टिकल 41 बताता है हमें कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है और जो उसका टेन्योर है, उसका टाइम पीरियड है वो 5 ईयर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन कैन अमेंडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी मीन्स एटलीस्ट 66%। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेट अप बाय कैमरल लेजिस्लेचर। द अपर हाउस इज सेनेट एंड लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है मेरी टाइपिंग में, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का बताता है जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बाई कैमरल है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट पॉइंट, द सेनेट कंसिस्ट ऑफ 104 members, ओरिजिनल 45 raised up to 63 in 1977 and to 87 in 1985. जनरल परवेज मुशर्रफ raised membership to 100 through LFO Legal Framework Order 2002, 8th Amendment to 104, then 96 after FATA merged, now 96. Next point, the term of members of Senate is 6 years. Next point, the National Assembly consists of 342 members. Next point, according to the 1973 Constitution, the President must be a Muslim. The next point, who elect him? National Assembly and Senate. Next point, who elects the Prime Minister according to the Constitution of 1973? National Assembly. Next point, what age was specified for a person in Constitution of 1973 who wants to be the member of Parliament? वो एज क्या है? नॉट लेस देन 25, वो एटलीस्ट 25 ईयर्स का होना चाहिए वो पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज? वो है 1973। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1962 का, उसमें उर्दू एंड बंगाल जो थी वो नेशनल लैंग्वेज करार दी गई थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो सेपरेट हो गया, जो बांग्लादेश बन गया। इसके बाद जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उर्दू जस्ट एक लैंग्वेज जो है उर्दू, उसको डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स मेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? तो वो है 26। टेक्निकली देयर आर 26 अमेंडमेंट्स, बट 23 अमेंडमेंट्स वर मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन and there were not passed by the parliament as the 3 amendments collapsed.